एक ही रन इफ्तिखार हासिल कर सके तो अब खासी तगोदो करना पड़ेगी ये रन्स बनाने के लिए सदरन पंजाब की टीम को। उनके टॉप ऑर्डर की फॉर्म पहले ही मिली जुली है। ज़ीशान अशरफ ने पिछले मैच भी, सुहेब मकसूद भी रन्स बना चुके हैं, लेकिन खुशदिल शाह आउट ऑफ फॉर्म है। उमर सिद्दीक, सैफ बदर ये इन आउट होते रहे हैं। इतनी पूरे एतमाद ये बैटिंग लाइनअप नहीं है। इनफील्ड को क्लियर किया, लेकिन ऑफ साइड स्वीपर सैफ बदर गेंद तक पहुंच गए और दूसरा रन भी हासिल किया। अच्छी दौड़ लगाई, इस बात को यकीनी बनाया कि अगले ओवर में इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक मिल जाए। अच्छी रनिंग थी और एक बार फिर बड़ी हिट के लिए जाना चाह रहे थे, अच्छा कनेक्शन नहीं बना सके, लेकिन 2 रन हासिल हुए। सदर्न पंजाब की बैटिंग लाइनअप की बात हो रही थी, उनमें वो चीज़ जो हमें देखने को मिली है कि T20 स्पेशलिस्ट हिटर्स या जो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटर्स खेलते हैं, इस तरह का वो एक्स फैक्टर नहीं देखने को मिला। अगर बॉलिंग की बात करें केपी की, तो सारा एक्सपीरियंस वहाँ मौजूद है। जुनैद खान आज प्लेइंग 11 में आए हैं। शाहीन अफरीदी, जिनको जितनी तारीफ़ की जाए कम है, 5 विकेटें हासिल की थी पिछले मैच में। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन T20 में आप कुछ भी नहीं कह सकते। मोहम्मद इरफान और राहत अली, उनके 4-4 ओवर्स मुकम्मल हो गए। हुसैन तलत का भी कोटा पूरा हुआ। इस तरह बिलावल भट्टी, 5 ही बॉलर्स हैं शान मसूद के पास। बिलावल भट्टी आखिरी ओवर कर रहे हैं इस वक्त मीडिया सेंटर एंड से। भट्टी जब शुरू में आए थे तो बाउंसर फेंक रहे थे, अब यॉर्कर्स फेंकना पड़ेगी। वकार यूनुस इनके फेवरेट बॉलर हैं। वकार यूनुस को फेस करने के लिए बैटर्स जो हैं, जूते खास तौर पे एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ आते थे, क्योंकि जिस तरह के उनके परफेक्ट यॉर्कर्स से स्पीड के साथ अगर वो आपके जूते पे लग जाए तो फिर या पाँव बाहर होता था ये बैट्समैन। 5 गेंदें बाकी हैं। सवाल ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा ये 200 का हिस्सा हासिल कर सकेंगे। फिर एक ही रन बनेगा। फील्डर पर वक्त पहुंचने में कामयाब हुए। इफ्तिखार अहमद यही चाहते थे कि ज़्यादा सामना खुद करें। ये दोनों टीमें हैं, निस्बतन बड़ी उम्र के क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं। बिलावल भट्टी उनमें से एक हैं। इससे पहला जो आज मैच हुआ था सेंट्रल पंजाब का और नॉर्दर्न का, दोनों टीमों में ज़्यादातर नौजवान थे। और यहाँ फिर से मिस फील्डिंग देखने को मिली। सही तरह इस थ्रो को कलेक्ट नहीं कर सके बिलावल भट्टी। उनके पास खासा वक्त था। खराब क्रिकेट। 2 रन हासिल हुए और केपी के लिए अच्छी बात यह कि इफ्तिखार फिर से स्ट्राइक पे आ गया, और इसी चीज़ का गुस्सा ज़्यादा जो है सदर्न पंजाब के कप्तान को भी था। अभी तक बिलावल भट्टी ने अच्छे यॉर्कर्स किए हैं, ज़्यादा रूम नहीं दिया, लेंथ परफेक्टली हिट कर रहे हैं, लेकिन ये इनको अगली 3 गेंदों पे दोबारा करना पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद को कोई मौका नहीं देना चाहिए कि वो बाउंड्री मार सकें। इस बार लेंथ मिली और इफ्तिखार अहमद ने लॉन्च कर दिया इसे वाइड लॉन्ग ऑन पर इस बुलंदोबाला छक्के के लिए। रिवायती अंदाज में हिटिंग करते हैं इफ्तिखार अहमद, और अगर लेंथ मिल जाए इन डेथ ओवर्स में तो सोने पे सुहागा। लेंथ देने का मकसद ये कि आप चाह रहे हैं कि बॉल आपकी बाउंड्री से बाहर ही जाए। इफ्तिखार अहमद को ये लेंथ देना एक फ्री हिट है,
जिस तरह सेटल्ड हैं वो, जिस तरह की शॉट्स खेल चुके हैं बिलावल भट्टी, अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन फिर इस बार इस टाइम पे लेंथ दी और नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। बिलावल भट्टी कम गुड लेंथ पर गेंद को गिराते हैं। आमतौर पर शॉर्ट पिच बॉलिंग करना इनको पसंद है, और ये तो बिल्कुल वक्त नहीं था गुड लेंथ का तजुर्बा करने का। दूसरे रन की कॉल है, मोहसिन ने इस बार मना कर दिया। इफ्तिखार अहमद खुश नहीं है खुद से भी और अपने पार्टनर से भी, लेकिन अभी भी उनकी टीम के पास मौका है 200 तक पहुंचने का, जो कि मैजिक स्कोर है। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग थी इस बार, बिलावल भट्टी का अच्छा फॉलोअप बॉल था, लेकिन इफ्तिखार अहमद यही चाह रहे कि स्ट्राइक अपने पास रखें। रन नहीं था मौजूद, कॉल बुरी नहीं थी, लेकिन अब मोहसिन की जिम्मेदारी आती है आखिरी बॉल फेस करने के लिए। फील्ड को बिल्कुल फैला दिया गया है, या लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप थर्ड मैन पर इरफान को भेजा गया मोहसिन के लिए। ये ऑन साइड में आप देख सकते हैं फैली हुई फील्ड, क्योंकि थर्ड मैन पर इरफान को पीछे हटा दिया गया है, इसलिए स्क्वायर लेग पर जो फील्डर थे उनको आगे लाया जा रहा है, हुसैन तलत को दायरे में। ये 4 फील्डर्स का दायरे में होना ज़रूरी है। अब तक 3 नज़र आ रहे हैं, फिर नज़रसानी की अपने फैसले पर। थर्ड मैन पर इरफान गए थे, उन्हें आगे आने को कह दिया गया, पर पॉइंट के फील्डर को पीछे किया गया। 1 रन बना और एक ही बेहतर जाना अपने लिए मोहसिन और इफ्तिखार ने। इस तरह 20 ओवर्स और 200 रन्स केपी के मुकम्मल हुए। 5 विकेटें उन्होंने गंवाई और टॉस हारने के बाद ये अच्छा स्कोर है इस पिच पर, जहां पर बॉलर्स के लिए मदद भी मौजूद है। 45 रन इफ्तिखार ने बनाए, सिर्फ 20 गेंदों में 200 से भी ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा, और अपनी टीम को बहुत मजबूत पोजीशन में ला खड़ा करने में मोहम्मद हफीज़ के बाद इनका सबसे बड़ा हाथ है। बहुत उम्दा बैटिंग की है, जिस तरह की T20 बैटिंग होनी चाहिए, और जिस स्टेज पे ये आए थे केपी को ज़रूरत थी कि ये इस तरह की जहाराना बैटिंग करें और अच्छा टोटल जो है पोस्ट करें। सदर्न पंजाब ने तीसरी दफ़ा 200 करवा दिया है, और उनके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस केपी की बॉलिंग लाइनअप में है। देखना ये होगा कि ये इस टारगेट को चेस कर सकेंगे या नहीं। ये एक नज़र डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो स्कोर कार्ड है। फ़खर जमान 13 रन बना सके, गिराए जाने वाले कैच का भी उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मोहम्मद हफीज़ और रिजवान के जो कैचेस गिरे उन्होंने निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की। हफीज़ ने बहुत ही आला इनिंग्स खेली, 35 गेंदों में 67 रन की, छक्कों की बारिश कर दी। और इफ्तिखार अहमद वहाब रियाज के साथ मिलकर स्कोर को 200 तक लाने में कामयाब ठहरे। की बॉलिंग एक्सपीरियंस, राहत अली 2 विकेटें लेके गए, हुसैन तलत ने अच्छी बॉलिंग कराई, वेरिएशन यूज़ की 2 विकेटें, जाहिद महमूद 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ज़्यादा कहा जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो ख़ास नहीं रही, ऑन एंड ऑफ करते रहे, लेकिन एक्स्ट्रा 5 दिए, टोटल फिर से तीसरी दफ़ा 200 करवाया है। इस मैच में सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
MCS से एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आज सादर्न पंजाब की टीम खेल रही है KP से। टॉस जीता सादर्न पंजाब ने और पहले बैटिंग करने की दावत दी खैबर पख्तूनख्वा को। ये आप झलकियाँ देख सकते हैं। फ़खर जमान बहुत जारहाना मूड में लग रहे थे इब्तिदा में, और यहाँ पर उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, उनका कैच गिराया जीशान ने, और उसके बाद एक और कैच गिरा। रिजवान इस मरतबा लकी बैट्समैन थे, खुशदिल शाह ने गलती की, रिजवान ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, सेंचुरी स्कोर की। फ़खर जमान लगता था कि आज बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन ये बड़ा शॉट खेलते हुए ही अपनी विकेट गंवा बैठे। बिलावल ने कैच लिया, बिलावल ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जब कैचेस गिरे तो उसके बाद बॉलर्स के लिए खासा मुश्किल हो गया, खास तौर पर स्पिनर्स के लिए। मोहम्मद हफीज़ ने मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग और बार बार हवा में खेला, छक्के लगाए। मिस फील्डिंग का भी फ़ायदा उठाया जाता रहा, यहाँ तक कि रिजवान का सर हिल गया और वो कैच आउट हो गए। दूसरी कोशिश में शान मसूद ने मोहम्मद हफीज़ स्लो डिलीवरी पर आउट हुए, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर विकेट दी हुसैन ने। हुसैन तलत ने शोएब मलिक को बड़ी जल्दी चलता किया, अच्छा कैच लिया इरफान ने। बिलावल भट्टी आए, वहाब रियाज, इफ्तिखार अहमद उस वक्त जारहाना मूड में थे। इफ्तिखार ने सनसनीखेज बैटिंग का मुजाहरा किया, वहाब रियाज गो के उनका साथ छोड़ गए, लेकिन इफ्तिखार अहमद का बल्ला चलता रहा। जब भी यॉर्कर अटेम्प्ट किया गया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया इफ्तिखार ने। लेंथ गेंद मिली बिलावल भट्टी की, उसको बहुत दूर पहुंचा दिया स्टैंड्स के करीब। इस तरह 200 रन स्कोर किए, 100 रन की उस पार्टनरशिप की बदौलत जो हफीज़ और उनके पार्टनर रिजवान के दरमियान हुई थी। यहाँ पर एक मत ध्यान दिया। Well, a massive first inning score from Khyber Pakhtunkhwa, 200 for 5, Rizwan 55, Iftikhar 45 of 20. I thought Hafiz batted beautifully, 67 of 35. Well, the bowling, well, nothing to write home about. 2 for 37 for Rahat, 2 for 38 Hassan Talat, but at the end of 20 overs, the
went for 10 and over. They're coming on with their very subtle yellow shirts. But it's the third time that South Punjab in this National T20 Cup, the third game and the third time that they've conceded 200. They've been consistent in conceding runs, but now they have the task of actually chasing them down. Khyber Pakhtunkhwa do have a potent bowling attack. Wahab Riaz, Shaheen Shah Afridi, Junaid Khan brought back into the side. But they'll be well happy with the way things have gone and the way they've batted. Mohammad Hafiz, Rizwan, Iftikhar made sure that at the halfway point, they are the clear favourites. Sikandar, a massive total to chase down. Pretty potent bowling attack to face as well. KP is getting better and better after the first game where they lost. They're now stamping the authority. He's getting runs after runs in every innings, and then what you just mentioned, 45 in no time. It's going to be an ask for the already struggling South Punjab, who've lost the first two games. It would be very important and an obvious thing that they need to get a start. A proper start for their side in order to stay in the game to get the 200 plus that's required. 201 the target for them. Shan Masood will have to play the key, and these are the moments where they're most needed. Then they start shining. With him as their wicketkeeper, batsman opener, who didn't really have a very good day behind the stumps. Probably can be something for him with the bat. Zishan will come in for South Punjab along with the captain Shan Masood. Zishan Ashraf had a good PSL, does strike the ball hard. Shan Masood needs to be the player that anchors the innings, but also make sure that they up with the run rate all the time. And because they're two left-handers at the crease, and because it's a new ball, and because it's the man in form, it's going to be Mohammad Hafiz. Very challenging for the left-handers to get him away. Ball's very straight. Just the ball to angle back into the left-handers. Gets a lot of LBWs. But before all that can begin, there has to be adjustment to the side screen. Right arm round the wicket. Hafiz will make sure that he covers all the angles with the field. So the chase begins. Round the wicket, he won't spin it a lot, but he'll make sure that every ball is attacking the stumps. So straight away, it's down to the batsman to either come down the track or take a risk, giving himself room. He's floated that one up, and Zishan Ashraf starts off with a maximum. Kind of cricket they'll have to play in order to stay in the game. 6 straight away on the very first ball he faces. Reaches to the pitch of the ball and smashes that one straight into the advertisement hoarding. That's very well done. For the power play, and keeping the chase halfway through, not to lose too many wickets till the 15th, and then launch themselves in the last 5. Nearly snuck through. Always going to dart back in those deliveries, and he saw Zishan come down the track. He went early inside edge, saving him. You have to take a risk against Hafiz if you're going to get any sort of momentum into the innings, impetus into the innings.
because he just off the back foot. He's timed that so well that it's gone to the fence. Yes, we're deep mid-wicket and a long on. There's no way the circle can stop that after it beats them. It's very well played off the back foot. Push. Get it in the gap and then just races through. So good start for them. A 6 and a boundary. Already in double figures, 12 for none. Wanted two right from the word go. Shan Masood hit that and said two straight away, and they ended up getting to quite comfortably. Wide open spaces in front of square on the leg side, so anything that actually is in that gap, there's a huge gap with long on and deep in wicket, so there is an opportunity to place it there and get it run. Shan Masood wants another run, but not this time. Productive first over, 14 without loss. There we go, Shaheen Shah Afridi. Make sure he doesn't test the fielders. Just hits the stumps, left arm, medium far. But anyway, he's going to go from over the wicket. He does get the ball to shape. Very good with the new ball, very good all round as a T20 bowler. Starts off with the leg side and has just been clipped over. Has that gone all the way? No, one bounce into the fence. Dishan looks in fine form. Well, he surely did make him look medium fast. On the legs, just lifted that one up and cleared it nicely. Oh, on the bounce, sorry. That's the start they've been looking for, an ideal start. Not to worry too much about what's the actual total if you can maintain that required run rate where they are really ahead of it at the moment. With your hand-eye coordination, he is surely medium fast. Yeah, my hand-eye coordination in the commentary box, he is medium fast. I think he's medium slow even. But the way that Zishan Ashraf has started, the wicket-keepers are all-rounders nowadays. They have to be good with the bat, and Zishan Ashraf is more of a batter than a keeper. He's very good with the bat, and he started off well. An extra delivery, extra run, but on the legs. Yeah, it is. This is Shaheen Shah. His 5 wickets yesterday, right through over Zia. He's been very, very consistent throughout. And he's continuing on with this form. That's a good catch taken in the long on. He was very good. He didn't really allow the opposition to free their arms. Always kept them in check. Back live. That was his 5th. But he was quite disappointed because just a couple of games ago, he got 6 wickets for Hampshire, and he would have become the first bowler, fast bowler, to get 6 wickets twice in T20 cricket. Maybe he thinks that he'll get one today. Beautifully driven through the offside. Don't think that was off the middle of the bat, but in the gap, and 4 all the way. He's made it look so easy, totally in control. Beautifully played in the gap.
Yeah, Shaheen Shah Afridi has had a terrific year all around, all 3 formats, but in T20 he's got 30 wickets, which is the most for any fast bowler this year. Only Rashid Khan has more, 32, and Pakistan A team has been renamed as well. They think they might follow suit and have the same form. They've been renamed Pakistan Shaheen. And here we go, full straight Shaheen Shah Afridi in the wickets yet again. Wow, for a moment it looked as if it's going to miss. It's got him right on the toe. He's in the crease. Seems to be a bit surprised, the batsman, but they always are. Well, a good start, but it just comes to an end quickly. Zishan goes for 15, and South Punjab are now 23 for 1 after 2. After the dismissal of Zishan. I'll have a look at that wicket again and we'll have Bazil Khan comment on that. But that's the first one already. Iftikhar has been given the opportunity with the ball. He replaces Hafiz. Yeah, part-time off-spin from Iftikhar now. He's a good option in white ball cricket. But I like this from Rizwan. He started off with Hafiz with the new ball. He's obviously an accomplished bowler. Hit through the offside, was straight to the fielder at cover, but started off with Hafiz. Hafiz batted really well, got a lot of runs in form. And now he's gone to Iftikhar, who's had a great time with the bat as well, and he's gone for him. I think next move should be Rizwan coming on to bowl, because he batted well as well in that first innings. He's got him. He's surely got him. No matter how tall you are, Shan, it will be tough for you to get back. Giving the charge, completely beaten by it. And that's the end of the captain of Southern Punjab. And the ball spun. The new ball normally just darts back in. It's a brilliant take by Rizwan. It's spun and it's bounced, but it's been dissolved into his gloves and he's taken the pails off. Shan Masood, captain, has to walk back. Both openers dismissed. 23. Saib Maqsood walks to the crease. He is in good form. Got a 50 in the first game. He's striking the ball well. From Multan, but he's walked in because his captain tried to come down the track. The ball spun. It bounced. But that doesn't make a difference to Rizwan. He just collected it and took the stumps off, and that's that. See you later. He's a hard hitter of the ball as well, Sohaib. Then he's a hard hitter. He walked across and was trying to smash this to Vihari, but it's just missed the leg stump. That was mighty close. So wide. It was very close to that leg stump. Shan could just sit and watch, but Iftikhar is bowling at good pace. He's bowling really quick off spin.
darting it in. Almost a cotton ball opportunity. It's been a terrific over. He's got the wicket and he's causing problems. And such a lot has happened, but he's only bowled, what, 3 wickets? Iftikhar is offering them that pace. He seems to be going hard at the ball. So Shan Masood swinging one, then Sohaib Maqsood missing one down the leg side. Here almost a... As a result of that, they've lost 2 wickets. If there is Jude, it hasn't yet taken over or hasn't yet affected the ball too much because it's very, very new right now. So you can get through, well, they're bowling really well if the car is, but they can get through spin bowling overs up front. And slows that one up. A dot ball to end the third. It's 27 for 2. Shine Shah Afridi, watch out for that in-swinger, watch out for a Yorker even. He likes bowling very full with the new ball too. Goes wide, good pace though. It's been given a wide, but it had some wheels behind that. He is the best keeper around, going around in Pakistan, well, probably the world with those type of takes. It's bounced and he's taking it over his shoulder and had no problems whatsoever. He's one of those keepers where the ball dissolves into his gloves. He was also one of those keepers who just collected the ball as if it was just a soft little thing coming, you know. The ball would sort of disappear into his gloves. I remember the days when Salim Yusuf used to keep. Wasim Bari? No, not that back. Diaz Ahmed? Apish finds the gap. Just happens so silently. You got to keep an eye on the ball, but it's as if nothing's happened. A boundary comes from nowhere. But that's a real top quality shot. He's played this through mid-wicket with a straightish bat. Normally you have to break the wrist to play to the onside, but he followed the ball with the bat, a straight batted push towards mid-wicket. That's a quality shot. Who's your quickest hands behind the stumps in Pakistan? Keepers who have been. You mentioned Rashid Latif, Moin Khan, and so on. I think Rashid Latif was not only for Pakistan, I think he was the best keeper that I've witnessed all throughout the world. I think the way that he made it look so easy and was able to, well, keep in a manner where even the fastest bowlers in the world or it was spinning yards, it wouldn't be out of his reach ever. So I think for me, Rashid Latif was right up there, one of the very best. Good eye, fast hands.
That's very well kept. He isn't that tall. It's just the timing of the jump is so right. Sometimes you tend to forget that Shah Afridi bowls quite sharp. He is quite quick. Does have the skill of swinging the ball, and we know that he has the Yorker, but to add to all of that, that previous delivery, that bouncer really took off. So it's not all about him keeping it up there, getting to swing. He can make you skip around in the batting crease with his pace. The slip has been brought in now. That's why he's